अम्मार गोरीवाला आज यहाँ पर मुन्नार क्षेत्र में हूँ। मुन्नार क्षेत्र में आज मैं नांगेली आयुर्वेदा महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर के साथ हूँ। प्रिंसिपल सर अगद तंत्र में HOD रह चुके हैं और साथ ही साथ अभी प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत थे। सर के साथ हमने साधना 4 का इवेंट अटेंड किया जो कि कोठामंगलम में अरेंज किया गया था। नांगेली आयुर्वेद में 3 दिवसीय कार्यशाला में कम से कम 9 सेशन किए गए हैं, जिसमें से एक फॉरेस्ट विजिट था और एक आज का विजिट मिलाकर टोटल 5 डेज ऑफ इवेंट हुआ है। ये सर अगद तंत्र में है तो मैं अगद तंत्र से रिलेटेड सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर सबसे पहले तो आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। सर अगद तंत्र को लेके मतलब व्हाट आर द फ्यूचर पर्पस फॉर द अगद तंत्र? कैन यू टेक द you can say any few words about the Agad Tantra and their future aspect of modern coordination? Now actually we are in the pool of toxins because our environment, our food, everything, our water, air, everything is polluted by toxins. So now we are facing so many lifestyle diseases. We can do very much in Agad Tantra aspects because there are so many yogas preparations to face these complications of toxins, and we have to focus on these lifestyle diseases. Anyhow, this atmosphere is like that. We can't change the atmosphere. It's a global problem. Then we have to convey the message of Agad Tantra to prevent the medicine, prevent the disease, and the life, change the lifestyle like that. Anyhow, we have so many yogas for this. Actually, in Garabhisha Chikitsa, we have to focus on the Garabhisha Chikitsa because all the disease comes by Agni Manja. We have some yogas like Murvati Churna, Murva Amrita, Natakano, Kadoli, Chabi Chitragai, like that. We can use as all type of lifestyle diseases. We can use this yoga because it will help the acne. The main aim to improve kidney function. And sir, and how acne can destroy the toxins. Yeah, that's a perfect thing. And sir, what are the vision for forensic in future? Forensic, actually, the forensic science we have to detach from Agad Tantra topics because I think forensic they have to study in another subject as a topic or in a second year or like that because it is not clinical, but they have to study after anatomy and physiology. They have to study the forensic science in the aspect of legal aspects and other things. Forensic and actually jurisprudence and forensic they have to study in the second year. Agad Tantra in third year. Agad Tantra because it is actually this toxicology, Ayurvedic toxicology is Agad Tantra. Because we can we know the definition of Agad Tantra like the same. You have to follow the definition of Agad Tantra in the topic. You have to teach or you have to study. सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो नेक्स्ट साधना इवेंट के लिए आप सब एक्साइटेड रहिए और अगर कोई भी डिटेल रहेंगी तो मैं आपके पेज पे पुट करूँगा। और ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज़ सर फॉलो द आयुर्वेदा नॉलेज ब्लॉग। थैंक यू सर।